head of the department, Delhi University, Department of Social Work. He has joined. And Professor Sangeeta Vijay ji, she has joined from Banasthali, Rajasthan. So lot many people whose names are who are gradually now, joining, and I must probably tell you, Dr. Verma, I have a big handicap today. My left ear is blocked. It always happens in the winter where wax accumulate ho jata hai, then I have to put sorry wax drops to dissolve. But sometimes they don't, and they have not. Oh, I've been putting since yesterday, they have not dissolved. So I'll have to go to the ANT doctor maybe tomorrow, and he will vacuum it. It's not a comfortable process. उसमें बहुत गुदगुद ही होती है कानों में, लेकिन I क्या know, I करना know. है, वो ब्लॉक्ड Uh, है. So I can hear uh, only with one ear. no, So, I can understand. That's a problem. but with one ear I can. Professor Anpurna Nautyal, she has been the Vice Chancellor of University, Central University at Srinagar. She is joining. And Professor A.P. Tiwari, he is head of the economics department and very eminent economist. So lot many people are will be joining, and they are very keen to hear you on this. So in spite of your wax and all, enough heat will be generated so that your wax gets dissolved and you Well, don't I need to hope go to so. the I doctor. hope so. I dread going to the ENT specialist because that vacuuming is not a very nice process. There's an enormous amount of tickling in the ear. But this Yeah, happens every year. yeah. For the last 4 5 years, this has been going on. I don't know what to do. In winter, अभी जब यहाँ temperature 4 5 degrees हो गया तो ये start हो. No, चलो. no, Sure. So that's whenever fine. you're ready, Yes, yes. I have to jump So I on to think first channel after this. we maintain the schedule of time. So it Okay. is exactly 4 o'clock, Yes. and now at 4 o'clock we will start Okay. and hand over to Dharmenji to start the proceedings. Okay. Dr. Dharmen. सादर प्रणाम. सीएसएसपी वेव मंच पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं. एक ऐसे विषय पर जिससे अनौपचारिक चर्चा दौरान ही जो आज के एक्सपर्ट हैं हम लोगों के, उन्होंने कहा कि हम लोगों के इर्द गिर्द का सारा वातावरण ही बहुत हॉट चल रहा है, बहुत एक्टिव चल रहा है. एक बहुत ही अजीब सा वर्ड लिया था हम लोगों ने, ट्रम्पिज्म का, जिससे पूरी दुनिया बहुत परेशान सी दिखाई दे रही है. और इस तरह की परिस्थिति में इंडिया के लिए आगे बढ़ने के रास्ते क्या हो सकते हैं, कुछ इस तरह का विषय रख के, और एक बहुत ही महान शख्सियत को हम लोग आज लेके आए हैं अपने इस मंच पर. मैं सभी का स्वागत करता हूं सीएसएसपी की तरफ से. आदरणीय एम्बेसडर प्रभुदयाल सर का, प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल मैम का, प्रोफेसर जितेंद्र नारायण सर का, प्रोफेसर एपी तिवारी सर का, प्रोफेसर संध्या चतुर्वेदी मैम, संध्या भट्ट मैम, और हम लोगों के निर्देशक डॉक्टर ए के वर्मा सर, प्रोफेसर संजय कुमार जी, मैं सबका स्वागत करता हूँ. सीएसएसपी का अपना एक छोटा सा प्रयास कि हम कुछ बहुत ही मौजूद विषयों पर एक सार्थक विमर्श कर सकें और उस विषय पर एक आधिकारिक निष्कर्ष तक पहुंच सकें. इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं. हम चाहते हैं कि जो भी विषय लिए जाएं उनमें एक गंभीरता हो, और उस विषय का जो एक एक्सपर्ट बुलाया जाए, वह एक्सपर्ट अपने आप में इतनी महारत रखता हो जितनी महारत की अपेक्षा शायद और बाकी बहुत सारे लोग नहीं करते. आज का ये सेशन आगे 1 घंटे तक एम्बेसडर सर के द्वारा लिया जाएगा. सर, मैं आपके बारे में जब पढ़ रहा था, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप सर से जुड़े रहे हैं और उसी विश्वविद्यालय से आते हैं जहाँ से सर स्वयं भी आते हैं. इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आते हैं सर. आप 1953 की से हैं आप, और 1976 से आपको विदेश सेवा का अवसर मिला है. लेकिन जिस चीज ने बहुत आकर्षण पैदा किया मेरे मन में, इंडियन पैनोरमा ने एक बार आपके लिए लिखा था सर, और मैं वही लाइन दोहराना चाहूंगा यहाँ पे. एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन करना आसान नहीं है जिसमें लगभग पूर्णता के इतने सारे गुण हों. एक प्रतिभाशाली छात्र,
एक कुशल खिलाड़ी, एक सशक्त वाद विवाद करता, एक सफल राजनयिक, एक स्नेही पति, एक स्नेही पिता और मित्रों का मित्र। कोई इनमें से कोई एक विशेषता अगर किसी एक व्यक्ति में जुड़ती है तो वो महानता की कैटेगरी में शामिल हो जाता है। और आपके लिए इतनी सारी विशेषताएं एक साथ जुड़ी गई हैं। आप जब पढ़ रहे थे, आपने राजनीति विज्ञान में महारत हासिल की, वहां आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे। आपने जब विदेश सेवा को शुरू किया तो विदेश सेवा में भी आपने लगभग दर्जन भर से अधिक देशों तक आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया। न्यूयॉर्क में आपको लंबे समय तक रहने का अवसर मिला। आपने केवल विदेश सेवा में काम ही नहीं किया, वरन आज भी रिटायरमेंट के बाद भी कंटिन्यूअसली आप विदेश सेवा पर लोगों को जागृत करते रहते हैं, और विदेश सेवा के बहुत सारे विषयों पर आप चैनलों के लिए और अखबारी लेखन के लिए बहुत ही प्रिय व्यक्ति हैं। आज भी आपको सुना जाता है और आपको पढ़ा जाता है। दो किताबें जिनका शीर्षक ही बहुत आकर्षक लगता है, मैं चाहूंगा कि उन शीर्षकों पर भी आप जब बात रखें अपनी तो जरूर बात करें। कराची हलवा और सुराजपुर कनेक्शंस। हम लोग अभी, चूंकि पढ़ने का तो अवसर नहीं मिला सर इन किताबों को, लेकिन आज के इस प्रेजेंटेशन में हम जरूर चाहेंगे कि सर आप इन किताबों के संदर्भ को भी थोड़ा सा एक अनावृत करिएगा, कि हम लोग जान पाए कि क्या चीज़ है इन किताबों में। तो बगैर एक भी क्षण गंवाए मैं सीधे सीधे आमंत्रित करूंगा सर को। आज संजय भैया शायद अभी उपस्थित नहीं, उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो, लेकिन मैं सर को ही सीधे आमंत्रित करूंगा कि सर आपके मित्र भी रहे हैं, और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सर आप सर को आमंत्रित करें, और अगले एक घंटे के लिए फिर हम लोग सुनेंगे, और उसके बाद संजय भैया प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करेंगे। सर, हम लोग के थैंक यू। निर्देशक आपको थैंक यू शुभ। धर्मेंद्र जी। और सबसे खुशी की बात ये है कि हम लोग बैचमेट थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। वी स्टार्टेड आवर कैरियर इन 1970। एक ही साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। और प्रभु दयाल वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट, जैसा कि आपने खुद ही बताया कि इन्होंने विश्वविद्यालय में टॉप भी किया, और विश्वविद्यालय ही नहीं टॉप किया, आईएएस में टॉप किया। सो एंड ही हैज ब्रिलियंट पर्सनालिटी, ब्रिलियंट कैरियर। हर तरीके से मैं क्या क्या उसका बताऊं। और ये बहुत ही सौभाग्य रहा कि बहुत सारे हमारे मित्र जो हैं वो आईएएस में, फॉरेन सर्विसेज में रहे। मैं शिक्षण लाइन में आया तो मुझे तो पूर्ण संतोष है। लेकिन अभी मैं एक दिन एम्बेसडर दयाल से बात कर रहा था, तो वो भी मुझे लगता है कि अपने फॉरेन सर्विस कैरियर से बहुत संतुष्ट रहे हैं। लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट वो उन्होंने कहा कि अरे आप तो बहुत वो ऐसा काम कर रहे हैं, वैसा काम कर रहे हैं, मुझे तो क्या करना है। हमने कहा कि हम अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स को जानते हैं जो कि रिटायरमेंट के बाद उतना काम नहीं कर रहे हैं एकेडमिक्स में जितना आप कर रहे हैं। I can daily read his at least two write-ups, two eminent, journals और अखबारों में आपके, तो कम से कम तीन चार तो डेली टीवी पे और एआईआर पे डिस्कशंस होते हैं आपके। आज ही अभी इमीडिएटली 6 o'clock शी इज, जैसा कि आपने खुद ही बताया कि बरका द चैनल पे भी तुरंत ही 6 बजे जाना है आप। सो बहुत ही पता है, एक यूनिक एडमिक्सचर है प्रोफेसर एम्बेसडर दयाल साहब। Or I'm very fortunate that I have friends like this. And he, despite his very busy schedule and all, he did not say no to me. And for that, I express my gratefulness on behalf of myself and my friends and CSSP. सो जितना कहा जाए कम है। जैसे कहा जाता था पहले जमाने में कि थोड़े लिखे को बहुत समझिएगा, उसी प्रकार से आप लोग थोड़े कहे को बहुत समझिएगा। एंड आई थिंक चूंकि टाइम का शॉर्टेज है मिस्टर दयाल के पास, तो हम लोग ज़्यादा इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधे मैं डॉक्टर संजय जी अपने जो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम he should be inviting our guest today, and he'll speak as much as he wants to. And the moment he feels that उनको बड़ा ये शक शुबा था कि लोग कहीं सो तो नहीं जाएंगे आपके इस प्रोग्राम में। हमने कहा कि भाई
हमारे यहाँ बड़े ही कीन लर्नर्स होते हैं एंड इट्स ए प्लेटफॉर्म ऑफ कलेक्टिव लर्निंग। और हम लोग हमेशा कुछ नया सीखने के फिराक में रहते हैं इस चक्कर में। तो previously we had invited Professor Nautyal and she spoke brilliantly on the subject। कुछ इसी तरह का था। तो आप बिल्कुल इसकी चिंता मत करिएगा, कोई सोएगा नहीं, सब लोग जगे रहेंगे और सबके कैमरे भी ऑन हैं। And the moment you feel that, and anybody would feel that there are certain questions arising, आप लोग चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चन संजय जी को प्रेषित कर सकते हैं। And I can see Sanjay Bhatt also from Delhi University. And thank you, Sanjay, for joining. And so I immediately now hand over to Sanjay ji, our national coordinator, and he will conduct the program onwards. Sanjay ji. Thank you so much, sir. And it's really a great privilege for me to compare this program today on the issue of Trumpism, which are going to be addressed by eminent personality Prabhu Dayal sir. So we are really blessed today that such a dignitary is present here to say something about this new US policy under Trump regime, how he is conducting the whole affairs, the world affairs, and the whole, foreign policy affairs, and in the way he is catapulting the system of world politics is a major concern for all of us being academicians. So, मैं दरअसल बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में घूम रहे हैं और मुझे लगता है कि उन सारे सवालों को कैसे रखा जाए, किस तरीके से रखा जाए, इन सारे मुद्दों को, जिसमें दो तीन बातें जो मतलब इनफैक्ट जो मुझे लगता है जो सबसे बड़ी चीज ये है कि क्या ट्रम्प ने तय कर लिया है कि पूरे वर्ल्ड सिस्टम को पूरी तरीके से वो बदल के रख देंगे। दूसरी चीज कि अमेरिका के ऊपर सबसे ज्यादा कर्ज है, लगभग 38 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। तो क्या उस कर्ज को निपटाने के लिए इस प्रकार की फॉरेन पॉलिसी, या ये तो मतलब बेसिकली पॉलिसी कहना भी उचित नहीं है, जिस प्रकार के टैरिफ वो इम्पोज करते चले जा रहे हैं। एंड द थर्ड वन कि जो पूरी की पूरी जो एक अभी तक आफ्टर 1945 जो और आफ्टर 1991 जो पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का जो एक कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर को कैसे इन्होंने रातों रात बदल दिया। यानी अभी तो 1 साल इनको हुए हैं और आज ही एक तस्वीर आई है कि इन्होंने वेनेजुला और ग्रीनलैंड को लेकर, अभी 2-3 घंटा पहले की बात है, एक बड़े अमेरिका का राज यहाँ होगा, इन क्षेत्रों पे होगा। इसके अलावा उन्होंने उन देशों पे, तमाम सारे देशों, यूरोपियन जो मित्र अभी तक थे, तो उस पे टैरिफ इन्होंने लगाने की घोषणा की है और यह कह के कि जो हमारे पॉलिसी का विरोध करेगा उनके ऊपर हम तमाम सारे टैरिफ लगाएंगे। तो एक तो वह यह जो कहावत जो अभी तक प्रसिद्ध थी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या इवन इन पॉलिटिक्स में देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड और फो, जो कहावत है, शायद ट्रंप महोदय ने उसको पूरी तरीके से चरितार्थ कर दिया है। और इसके अलावा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो मुद्दा जो मुझे समझ में आता है कि क्या भारत के साथ जो यूएस की जो पॉलिसी रही है, जो ट्रेड पॉलिसी रही है खास तौर से, जिसमें भारत सरप्लस कंडीशन में था, लगभग 47 बिलियन के आसपास डॉलर के आसपास का भारत निर्यात करता था और लगभग 40 के आसपास या इनफैक्ट 87 के आसपास शायद निर्यात करता था और 40 के आसपास का आयात करता था। यह एक प्रकार से चीजें एकदम बिल्कुल बदल गई है और अब तो भारत के ऊपर इन्होंने जो 50% टैरिफ लगाया है, बीच में तो यह भी सुनने में आया कि यूएस कांग्रेस से 500% टैरिफ की वो प्रोपोजल को आगे रख रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां बड़ी ही एक अजीब दिशा में जा रही है और साथ ही साथ ये जो ट्रम्प की जो सनक है, मुझे तो लगता है कि सबसे बड़े साम्राज्यवादी एक नेता के तौर पर वह स्थापित हो रहे हैं, शायद हिटलर और मुसोलिनी से ज्यादा प्रभावित है। और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि उनको नोबेल पीस प्राइज भी मिलना चाहिए। 8 युद्ध उन्होंने रुकवा दिए। बात समझ में नहीं आ रही है कि उन्होंने युद्ध रुकवाया या पूरे दुनिया में युद्ध को भड़का दिया है। ये तमाम सारे सवाल हैं।
मुझे लगता है कि समय प्रभु सर के पास बहुत कम है। इन्हीं सब सारे मुद्दों से जुड़कर हम आज के इस विषय को लेकर आगे बढ़े और हम सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं सीएसएसपी के इस मंच पर। और मैं सीधे सीधे प्रभु सर आपसे मुखातिब होता हूं, क्योंकि आपका एक एक मिनट बहुत कीमती है। तो सर प्लीज इन सब मुद्दों पे क्या, कैसे, किस तरीके से देखा जाए, समझा जाए, भारत को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। फूंक फूंक के निश्चित तौर पर कदम रख रहा है, लेकिन आगे क्या इसके रिपरकशंस हो सकते हैं आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से, उन सारी चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे। प्रभु सर प्लीज। Esteemed ladies and gentlemen, I am very honored that my old and dear friend, Dr. A.K. Verma, has invited me to share with you my ideas on Trumpism and the way forward for India. Now, a very generous introduction about me has been given by Mr. Dharmendra, by Dr. A.K. Verma, and by Mr. Sanjay Kumar. So I am very honored, but I was referred to as a Mahan Shakhsiyat. Let me clarify that this description doesn't fit me at all. I am an ordinary human being, someone who retired from the Foreign Service almost 13 years ago and has seen the world change and made observations. I like to interact with friends like you. I also give my views when requested on television because that's a way of reaching out to people and getting a feedback. So when I was invited to talk to you today, I agreed with great happiness because I am sure that whether you profit from this interaction or not, I will gain by hearing what your views are on this very important subject relating to Trumpism and the way forward for India. Now, in the context of the current and rapidly evolving global scenario, Trumpism is a very important subject for anyone wanting to analyze not just the challenges confronting India, but also the important global challenges. But I will first come to the challenges which we face. You know, Indian American Congressman Suhas Subramaniam recently said that President Trump has completely messed up the India-US relationship. This is exactly what Professor Sanjay Kumar was also saying, that how have things been lowered, or how things have plummeted to this extent. Now, the Congressman Suhas Subramaniam warned that deteriorating ties between the world's two largest democracies are hurting both countries, particularly their economic and strategic interests. So the question which was asked by Professor Sanjay Kumar and which I'm trying to answer is, what is the way forward for India under Trumpism? Now, first of all, a quick understanding of what Trumpism implies. You know, Trumpism is described as a right-wing political ideology and movement, and it gets its name because it is associated with President Donald Trump. Now, Trump has an America First agenda, which fuses elements of right-wing populism and economic nationalism. Trump is linked to slogans like "Make America Great Again," and it aims to challenge the liberal world order. Now, a core tenet of Trumpism is prioritizing nationalism and America First over international cooperation, and many of the symptoms are quite evident globally from these beliefs. Now, it is said that the phrase "nothing is off the table" has become a defining mantra of the second Trump administration's approach to domestic as well as foreign policy. Now, on the domestic front,
the administration is moving aggressively to reshape federal institutions. The Trump administration is asserting primary control over previously independent bodies such as the Federal Reserve and the US Department of Justice. Trump, if he views anything or any dissent as an obstacle, he will try to get it removed. And let me recall that during the budgetary disputes, the Trump administration demonstrated that it was willing to take unprecedented steps. And these steps included cutting food stamps for millions or attempting to fire thousands of civil servants to pressurize political opponents to give in to what he wanted. Now, as regards foreign policy, the Trump establishment has espoused what is called the Donro Doctrine. Now, Professor Sanjay Kumar referred to some recent descriptions, even today, of how Trump has said that American control will be fully extended to Venezuela and Greenland. Now, this is part of his doctrine of American dominance. His doctrine suggests that the US will use any available tools, economic or military, to achieve its goals within its sphere of influence, even if it means disregarding traditional multilateral norms or the concerns of smaller nations. So as a result, Trumpism has led to strained relations between the US and many of its allies and friends. We witnessed recently that there are serious tensions which have arisen between the United States and its European allies. Trumpism has also led to a very unpredictable global environment. For example, the series of rapid geopolitical shifts involving Venezuela and Greenland have significantly heightened global unpredictability. Now, tensions over Greenland have reached a state of an unprecedented crisis because Trump is following a campaign to annex the territory. He has made it clear that either you sell it to me or I'm going to take it by force. So this situation has triggered the most significant transatlantic rift in generations, and it involves now military deployments, along with, of course, trade wars and threats of invasion. So Trump has publicly stated that access to Venezuela's oil reserves, which is the world's largest, was a primary motivation for the intervention. Similarly, his interest in Greenland is driven by its vast deposits of rare earth minerals and strategic value in the Arctic. So both situations are heavily tied to resource control. They indicate that Trump is prepared to take unprecedented steps to expand executive authority and to pursue his America First objectives, even if it means totally upsetting the global order. Now, there is an important aspect which should not be overlooked. Trumpism is highly personality driven. And a very important part of Trump's personality is his huge ego. His ego is a central factor in his decision making and in his policies. Now, let me recall that in a 1995 New York Times opinion piece, which he authored, Trump said that his ego plays a major role in his life. And the title of his article was, "What My Ego Wants, My Ego Gets." So in that article, Trump discussed the role of his ego in his business transactions. Of course, at that time, he was totally a businessman. He was not into politics. But there can be no doubt that Trump's ego plays a big role in shaping his approach and policies as the President of the United States of America.
which is perhaps the most powerful political position in the world. Many observers, including mental health professionals, have described President Trump as displaying traits which are consistent with egotism, which is a personality trait marked by a sense of self-importance. Trump's personality shows an excessive need for self-admiration. His behavior is characterized by inflated self-esteem, self-centeredness, and a tendency to talk too much about himself, always projecting himself as superior or better than others. Now, another very important point is that Trump's behavior is also characterized by extreme tolerance for criticism. His typical response to criticism involves lashing out, blaming others, or attempting to discredit the source of the criticism. Therefore, a craving for admiration and loyalty is a key aspect of Trump's presidential style. Trump needs constant admiration, and playing to Trump's ego is often seen as advantageous for those who deal with him. Not just his own cabinet ministers, but also foreign leaders offer him praise and unwavering support. They have massaged his ego to manage diplomatic relations. Let me recall that the Trump Secretary General, Mark Rutte, last year publicly referred to Trump as daddy. Of course, he did so in a jocular, but at the same time, a very calculated manner. He sent private fawning texts, which Trump later made public. Again, in an effort to curry favor, multiple leaders, including Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif, Cambodian Prime Minister Hun Manet, and Argentinian President Javier Milei nominated Trump for the Nobel Prize, knowing his desire for the award. Of course, he didn't get it. But let's not forget that Pakistan's army chief, Field Marshal Asim Munir, was a central figure in this outreach. Reports indicate that he personally pitched the nomination during a high-profile lunch at the White House in June 2025. So not surprisingly, Trump subsequently started referring to Asim Munir as his favorite field marshal during public meetings. Now, let me also recall that the most recent incident of unabashed flattery and ego massage was when Venezuela's opposition leader, Maria Machado, handed over her Nobel Peace Medal to US President Donald Trump during a meeting at the White House on January 15. She described the gesture as a recognition for his unique commitment to our freedom. Let's recall that when she got it, Trump thought that he was a front runner. Trump had tried his very best, and he was hugely disappointed when Maria Machado got the Nobel Peace Prize. Now, speaking to Fox News later, after giving Trump her medal, Machado said Trump deserves it. Now, Trump, naturally, was quite happy. He said it a wonderful gesture of mutual respect. Now, clearly, Machado is hoping that her gesture might buy her something far more valuable. She wants US backing in order to head Venezuela in the post-Maduro situation. Now, whether Maria Machado succeeds in getting Trump's backing remains to be seen. But by handing over her Nobel Peace Prize to Trump, she has indulged in an extreme form of flattery to try and win his support in her campaign to head the Venezuelan government. Now, Trump's ego-driven decision-making has influenced major global events, including trade negotiations and US alliances. If his ego becomes hurt, he becomes very vengeful. I think India is discovering this grim and sad reality about Trump. Now, during Trump's first term,
2017 to 20, in fact, January 21, India-US relations were marked by a high-profile personal chemistry between Prime Minister Shri Narendra Modi and President Donald Trump. Significant advancements were made in defense and strategic cooperation, despite some friction over trade and immigration issues. The period was highlighted by massive joint rallies, the Howdy Modi event in Houston in 2019, and the Namaste Trump rally in Ahmedabad in 2020. These showcased a personal rapport between the two leaders. Now, let me recall that at the Howdy Modi event in Houston in September 2019, Prime Minister Modi welcomed Trump, and the two leaders embraced each other and walked together towards the stage. Now, drawing from his own campaign punchline, Ab ki baar Modi Sarkar, Prime Minister turned it around for his friend Trump and cheered for Ab ki baar Trump Sarkar. In rich praise for the American president, Prime Minister Modi introduced Trump as the name familiar to every person on the planet. Prime Minister Modi said that from CEO to Commander-in-Chief, from boardrooms to the Oval Office, from studios to the global stage, from politics to the economy and to security, Trump has left a deep and lasting impact everywhere. So as Trump began his address, he called Prime Minister Modi America's greatest and most loyal friend. Trump praised Prime Minister Modi for doing an exceptional job for India. Now let's come down to the Namaste Trump event, which was held in February 2020. This was the largest rally ever hosted by India for a visiting foreign leader. It served as a platform to showcase the personal bonhomie between Prime Minister Mr. Narendra Modi and President Trump. Now, over 100,000 people gathered to welcome Trump. The event was a high-profile charm offensive, specifically designed to appeal to Donald Trump's affinity for large-scale spectacles and public adulation. Prime Minister Modi publicly flattered Trump, calling him a true friend and a man who thinks big. The stadium was decorated with dozens of banners and billboards featuring Trump's name and image. So not surprisingly, the India-US relationship thrived in Trump's first term. The defense partnership was the strongest pillar of the relationship, with India being elevated to a major defense partner. Key defense pacts were signed to enhance military cooperation, including COMCASA in 2018 for secure communications, and BECA in 2020 for sharing geospatial intelligence. Now, the relationship was cemented by a shared concern over China's growing influence. Trump revived the Quad. He also renamed the Pacific Command as the Indo-Pacific Command to signal a broader strategic focus on a partnership with India. A strategic energy partnership was inaugurated in 2018, and this made the US a significant supplier of crude oil and LNG to India. So the first Trump administration witnessed closeness between Trump towards India. But at the same time, it was also characterized by a tough stance towards Pakistan. It was marked by significant aid cuts and public rebukes over terrorism. Trump famously began 2018 with a tweet in which he said, "The United States has foolishly given Pakistan more than $33 billion in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies and deceit.
thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan with little help. And Trump said, no more. In January 2018, the Trump administration suspended nearly $1.3 billion in annual security assistance to Pakistan. So the US adopted a tougher stance towards Pakistan because of Pakistan's involvement in terrorism. And the US also supported in the designation of Masood Azhar, who's the Jaish-e-Mohammed chief, as a global terrorist. He also supported the whole project of Pakistan getting grey-listed by the FATF, which you know was a very significant step. However, the relationship towards the latter part of Trump's first term shifted towards tactical cooperation because the US wanted to withdraw from Afghanistan, and Trump thought that he needed Pakistan's help in this regard. However, coming to the India-US relations, in Trump's second term, things are quite different. The India-US relationship is currently defined by sharp economic friction and a significant recalibration of strategic priorities. The most significant and stark departure from the first term is the use of high tariffs as a central policy tool. Now, trade relations between India and the US have reached a point of acute tension due to these steep tariffs. And the fact that Trump keeps on threatening more tariffs further damages the relationship. Trump has frequently labeled India a trade abuser and a king of tariffs. And he has publicly called India's economy dead or one-sided. This shows the extent to which he can go in becoming confrontational. So in April 2025, the Trump administration imposed a 25% baseline tariff on Indian goods to address what he said were trade deficits. In August 2025, Trump put an additional 25% punitive penalty for India's continued purchases of Russian crude oil. Now, these tariffs heavily affect labor-intensive industries such as textiles, gems and jewelry, pharmaceuticals, auto parts, and seafood. Nearly 55% of India's annual exports to the US, which are valued at approximately $87 billion, are directly threatened. Now, a pivotal ruling is expected by the Supreme Court regarding the legality of Trump's use of the international emergency economic powers in order to bypass Congress and levying these broad-based tariffs. So a ruling against the administration could provide some relief to Indian exporters. But White House officials have signaled that they have other tools to reimpose duties if necessary. In other words, we can expect the tensions to continue. Now, India's Ministry of External Affairs has criticized US tariffs as unfair, unjustified, and unreasonable. India has said that its energy sourcing is guided by the need to secure affordable fuel for its 1.4 billion citizens, and it's a matter of strategic autonomy. This sort of reply and criticism of what the US policy is seems to have further annoyed Trump, who has threatened further tariffs. Now, let me recall that in January this year, a few days ago, President Trump gave the green light for the Russia sanctions bill proposed by Republican Senator Lindsey Graham, who's very close to Trump. The legislation authorizes the US president to impose secondary tariffs
of up to 500% on any country that continues to purchase Russian oil or uranium products. Now, this bill explicitly targets China, India, and Brazil. And a vote in the US Senate is possible soon. So this has placed India's $85 billion export market to the US at risk of becoming commercially unviable. The Trump administration's H-1B visa policies have also negatively impacted India by disrupting the Indian IT industry's business model. Now, these policies limit opportunities for Indian professionals and students. The primary impact is the increased cost and stricter eligibility criteria for the H-1B visa, which Indian nationals largely dominate. You know, the H-1B visa charges, particularly the steep $100,000 fee for new applications, directly challenge the business model of Indian IT giants like Tata Consultancy Services, Infosys, and Wipro, who have traditionally and historically deployed large numbers of Indian engineers in the US. The new fee of $100,000 is a massive increase from the previous fee of $1,000 to $5,000. Therefore, the cost of sending employees to the United States erodes the profit margins of the Indian IT giants. Let me mention that the Indian tech sector contributes significantly to the Indian GDP. I understand it's about 7%, and the US accounts for a large portion of India's tech exports. So these are going to be adversely impacted. You know, moreover, Indian nationals make up about 70% of all H-1B visa recipients, making them the most affected demographic group on account of the policy changes. The prohibitive costs and stricter eligibility criteria favoring higher salaries mean fewer opportunities for entry to mid-level Indian professionals and recent STEM graduates from US universities to secure H-1B visa sponsorships. You know, there have also been several instances where Prime Minister Modi's refusal to massage Trump's ego reportedly hurt or frustrated Trump. Firstly, in September 2024, during the US presidential election campaign, Trump publicly stated that Prime Minister Narendra Modi would be meeting with him during his US visit. However, despite PM Modi's 3-day visit to the US from September 21 to 23, no meeting between the two leaders took place. The Indian Ministry of External Affairs and the Prime Minister's office said that no such meeting had been included in the official itinerary. Secondly, following a ceasefire between India and Pakistan in 2025, linked to Operation Sindoor, Trump repeatedly claimed credit for de-escalating the conflict. He wanted to bolster his case for a Nobel Peace Prize. Prime Minister Modi flatly rejected this, saying that the ceasefire was settled directly between the two nations without US mediation. Thirdly, when Prime Minister Modi went to Canada for the G7 meeting in June 2025, he declined an invitation from President Trump for a Washington stopover on his way back from the G7 meeting. Prime Minister Modi himself said, "The President of the United States called me saying, 'Since you are in Canada, please come over. We will have a meal and talk.'" Prime Minister Modi said he declined President Trump's invitation as he did not want to miss his scheduled visit to the land of Lord Jagannath, which is Orissa. However, you know, many insiders say that Pakistan's Army Chief Asim Munir was going to meet Trump over lunch, and Prime Minister Modi reportedly feared a photo trap where Trump might engineer a staged handshake between Prime Minister Modi and Munir to use it as a publicity prop for his pitch
to get the Nobel Peace Prize. So Trump's egoistic behavior is also characterized by anyone contradicting him. An extreme intolerance for anyone contradicting him. However, in 25 and early 26, the Indian government has officially contradicted and rejected several claims made by Trump. First of all, as I mentioned earlier, in May, Donald Trump claimed that the US mediated ceasefire between India and Pakistan came about because he had offered possible trade concessions. New Delhi rebutted his assertion. India's spokesman in the foreign ministry said top leaders in New Delhi and Washington were in touch following the Indian military's intense standoff with Pakistan, but that there was no conversation on trade. The spokesman said the issue of trade didn't come up in these discussions. India maintained that the ceasefire resulted from direct military-level communication. Then, in October 2025, the Ministry of External Affairs contradicted Trump's claim that PM Modi had promised him in a phone call that India would stop purchasing Russian crude oil. Officials stated that no such phone call or assurance took place. And India reiterated that its energy imports are guided by its own national interest and are in the interest of the consumers. But then recently, earlier this month, Indian government sources contradicted Trump's claim that India had ordered 68 Apache helicopters and was waiting 5 years for them. Now, officials clarified that India only ordered 28, all of them had been already delivered. So now the tariffs and H-1B visa fees have caused acute diplomatic tension. But many US experts believe that the long-term trajectory remains unchanged because Washington still views India as an essential counterweight to China in the Indo-Pacific region. They argue that the core geopolitical reasons for engagement are overwhelming because Washington views partnering with India as critical to sustaining its own long-term leadership and successfully navigating competition with China. In late 2025, the two nations signed an expansive new defense framework to strengthen their major defense partnership over the next decade. However, Trump's ego problem will continue to be an obstacle. Now, as things stand, the relationship between Donald Trump and Prime Minister Modi is characterized by a blow-hot, blow-cold dynamic. Both continue to profess a very good relationship, but significant policy friction has led to public disagreements and reports of personal tension. Their personal chemistry appears to have somewhat eroded. In January, a few days earlier, President Trump mocked PM Modi. He said the Indian Prime Minister requested a meeting and said, "Sir, may I see you, please?" Of course, India clarified that in diplomatic exchanges, it is polite to use terms like Your Excellency, etc. Now, let me come to some recent statements by the US Commerce Secretary, Howard Lutnick. He is a very important man in the Trump administration. He is the chief negotiator and handler of commercial matters. Now, he said in a public interview that the trade deal with India collapsed due to a lack of direct personal communication between PM Modi and President Trump. He said that a nearly finalized trade deal stalled because Prime Minister Modi did not personally call President Trump to close it. Lutnick stated that President Trump had viewed this call as a necessary step for finalizing
the agreement. And that is why the US side wanted PM Modi to make this call. Now, the spokesman of India's External Affairs Ministry rejected the US Commerce Secretary's remarks and said that this is not accurate. India said that PM Modi and President Trump had spoken on the phone 8 times during the last year. And they had covered different aspects of our wide-ranging partnership. However, the phone call issue, which Howard Lutnick spoke about, is a bit different from how the MEA spokesman has explained it. While Prime Minister Modi and Trump may have spoken 8 times in the last year, what Lutnick was saying is that PM Modi did not call Trump to request him to close the trade deal. Lutnick said in his interview that the US side wanted PM Modi to call Trump when the deal was nearing finalization. He said India's reluctance to set up the phone call between PM Modi and Trump meant that the agreement ran into trouble. In other words, the US side wanted PM Modi to massage Trump's ego for securing the deal. But PM Modi did not make the call to massage his ego. Now, many people in India feel that deal or no deal, PM Modi did the correct thing by refusing to massage Trump's ego. Of course, at the same time, there are many others who feel that PM Modi should have made the call as it was needed for protecting India's interests. So against this grim scenario, there is now something which is being portrayed as a hopeful sign, and which indicates that it may be possible to reset India-US ties. Now, on the 12th of January this year, Sergio Gore assumed charge as the new US ambassador to India. Now, Gore is a close confidant and former White House personal director for President Donald Trump. He is viewed as a person who's capable of leveraging his direct access to President Trump to resolve deep-seated bilateral issues between the US and India. Now, on his first day in India as the new US ambassador, Gore confirmed that both sides are actively engaged in trade negotiations. Gore emphasized that real friends can disagree, but always will resolve their differences in the end. He characterized the relationship between President Trump and Prime Minister Modi as real friendship. Gore said that in 2026, we will see a year of reciprocity, aiming for fair trade and mutual respect. So in a significant goodwill gesture, Sergio Gore announced India's inclusion as a full member of the Pax Silica, which is a US-led initiative aimed at building secure supply chains for semiconductors, critical minerals, and AI technology. Now, Gore has to navigate sensitive issues like India's continued purchase of Russian oil, which currently faces a 25% penalty with the strong likelihood of soon being raised to 500%. Moreover, his dual role as special envoy for South and Central Asia has raised concerns in New Delhi about the hyphenation of India and Pakistan. This is especially relevant as Washington has developed close relations with Pakistan now and is reportedly having an interest in Pakistani ports like Pasni. Sergio Gore's personal relationship with Trump, as also with his son, Donald Trump Jr., will perhaps allow him to bypass typical bureaucratic hurdles to deliver anchored messages directly to the White House. Now, a critical test for Sergio Gore will be the revival of the Quad Summit in India, which was postponed in 2025. Gore has indicated that a presidential visit may occur in the next 1 or 2 years. Of course, it would be contingent on trade progress. Let me also mention that in his arrival statement, Sergio Gore announced that a fresh round of trade talks was scheduled for the next day, Thursday, 13th January.
Now, while formal trade talks were not resumed, our External Affairs Minister, Mr. S. Jaishankar, held a phone conversation with US Secretary of State Marco Rubio, during which they discussed trade, critical minerals, nuclear energy, and defense. Now, will this be enough to placate Trump? Or will he only be satisfied if PM Modi personally calls him? The next few days will perhaps make things clearer. Meantime, India has recently slapped 30% tariffs on US pulses, and trade tensions are rising. American lawmakers have approached Donald Trump asking him to intervene and get a rollback. So let us see how things are shaping out. But nonetheless, summing up, there are currently very big challenges in India-US relations. As I said, these are due to economic friction and Trump's transactional foreign policy approach. Resolving tensions with the US requires navigating a complex environment shaped by Trump's transactional diplomacy, major trade disputes, and recent geopolitical friction. Let us be clear, Trump's ego will continue to be a primary driver of US policy. US foreign policy will continue to be highly personalized, transactional, and unpredictable. Therefore, this may require a departure from the institutional, rules-based approach of previous US administrations. The highly personalized and transactional nature of Trump's foreign policy will also make the relationship between India and the US susceptible to sudden shifts based on Trump's whims or immediate domestic political considerations. He changes course so rapidly that it becomes very difficult to deal with him. And therefore, it makes long-term planning difficult for India, as also for most other countries. As I recounted in great detail, the relationship has soured over the implementation of the 50% tariffs on Indian goods. And if the 50% tariffs on countries doing business with Russia come through, then matters will get even more complicated. Of course, strategic cooperation in defense-related areas remains good, and both governments maintain that the relationship is too important to be entirely derailed. But the future trajectory of relations will depend heavily on how both nations manage their divergent economic and foreign policy priorities. Thank you. Thank you so much, sir. It was really wonderful listening to you on the various aspects of Indo-US relationships, including the financial, strategic, and global politics. And in length, you talked about the Modi's and Trump chemistry, how it turned out to be from a close relationship to a very, a very straw kind of relationship. So, in that perspective, in that background, or in fact, on the basis of your lecture, which is definitely a very eye opener, and for all of us to learn something. And in fact, every leader of this country must learn something about the real picture of this Indo-US relationship in the current scenario, world scenario. सो मैं आई इनवाइट वर्मा सर, क्या मैं इनवाइट कर लूं? इसमें तमाम सारे लोग हैं, मैं चाहता हूं कि 2-2 1 मिनट, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हैं। सर Of आप course, Sanjay ji, of course, you can Yeah. take questions. Yeah, You yeah. are the star, of this show, conducting the show. So it's up to you. I Yeah, think yeah. it would be good if you first invite a few questions and then you Yeah. invite interventions, so that we can have the speaker answer certain queries
if Yes. there are at all. And then there can be interventions. So first questions and then interventions. First of all, I would like to ask, is this the beginning of third world war? एक तो मुझे ये लगता है, क्योंकि इस पे हमें No, लगता no, है Sanjay ji, it's unfair. Your questions would be the last. ठीक है सर. So first of all, I would like to invite Professor Annapurna Nautiyal, ex-VC from Hemvati Nandan Bahuguna University. Madam, if you want to say something about this present scenario of Indo-US or Trumpism, please please have your opinion on this issue. Yeah. Thank you so much. It was a pleasure listening to Ambassador Dayal, and I'm really very happy that Dr. Verma invited me for this event. I think it's a very worthwhile to listen to the view of an ambassador, because the approach is entirely different from the academics. So this is what he informed about the practical things, and that's very true. And I agree with most of the things which he said. And it's very tough time for India. Why? Because Trumpism is nothing but egoism. It is being led by ego, as Ambassador Dayal made it very clear. And I think some of the events are also suggesting that it can lead to new imperialism. Because the way Greenland is being pressurized, and they have changed the slogan MAGA into MAGA, make America go again. So they don't want to be the part of America, but they want to be part of Denmark only. And recently, Trump has also done the same thing for Diego Garcia, because this territory, which is located in Indian Ocean, originally belonged to Mauritius, and the UK decided to hand over it to Mauritius. Now, as Mr. Trump is very busy in land grabbing, because he wants to establish sphere of influence in each and every part of the world, whether Europe, whether Latin America, it considers its natural sphere of influence. So, and everything is rotating around the national interest of the US, because everything is about national security of the US. Now, the new Board of Peace, which Trump has also proposed very recently, that was proposed after the Gaza peace talks, peace pact, that was signed in the presence of many leaders and ambassadors and politicians. So initially it was authorized by the UN to maintain peace in Gaza. But now Trump has also launched one more campaign, and that is, if you want to be involved in this Board of Peace, you can become a member by paying $1 billion for permanent membership. And there are certain states who have been invited with a charter which has been sent to these countries. And this charter also replicates the same thing, that how to maintain peace, how to build security, and how to work for effective peace and a peaceful world order. So now Trump has become the another name of rule-making world. He's not caring about the rule-based order, but he wants to create certain rules which are suitable to his ego. So most of the foreign policy is being driven by ego, as Mr. Dayal very rightly said, that as our Prime Minister did not prefer to massage his ego, so he is totally annoyed with India. And the Brazilian opposition leader, Machado, offered her Nobel Peace Prize to Trump. And then Trump also threatened the Norwegian Prime Minister that your country did not nominate me for Nobel Peace Prize, therefore now I want Greenland. So this is a game of ego,
and also a game of new imperialism, land grabbing, etc. So I think Mr. Dayal spoke very correctly on these issues. So because he has also got a limited time and I have so many things to say, but I'll stop here only. But last point one, he also talked about Sergio Gore. Now you see his work profile. He's an ambassador for India, but he has to see Central and South Asia also. The same thing which Mr. Dayal said. And he has to see Bhutan, obviously. Then he has to see Pakistan and Bangladesh also. So India is not gaining that ground which earlier was given to India. So India is still struggling for a place in the US perspective. And I think the time will come when the US under Trump will realize the mistake of ignoring India. Because presently, as Mr. Dayal also suggested, that Trump respects the countries who have military, economic, transactional, and diplomatic power. So that way, this scenario is moving. And I would again like to thank Dr. Verma for inviting Mr. Dayal and for providing his thought-provoking talk. So without wasting any time, I'll say thank you very much once again. Thank you. Thank you, madam. By you saying about this Trumpism into egoism, and as Prabhu sir has also said before, and I'm reminded of the world famous writer Morgan Thauji. What he talked about human nature in politics. That means every politics has its root in the very basis of human nature, and Trump is the perhaps the biggest example of that nature of true politics. And also reminded of George Catlin. He also wrote and talked about this, and he wrote a book in human nature in politics also. So basically, what these writers have talked about and what is being practiced by Trump is very near to each other. So, Prabhu sir, do you want to say something on the saying of Madam Notial sir? Something? Yeah, please. No, I'm entirely in agreement with her. She and I said almost similar things. And there is no doubt that the path ahead is going to be very challenging, as she pointed out. हमारे बीच में सर एक बड़े अर्थशास्त्र के बहुत मशहूर विद्वान प्रोफेसर एपी तिवारी सर बैठे हैं, और मुझे लगता है कि उनके व्यूज पॉइंट को जानना सर बहुत जरूरी है, खास तौर से इंडो यूएस का जो ट्रेड स्टैंड ऑफ जो हुआ है, इसको लेकर क्या वो सोचते हैं। मैं चाहता हूं सर तिवारी सर प्लीज, आप शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी के पूर्व डीन भी रहे हैं और जबरदस्त अर्थशास्त्र पे आप एक मास्टरी जिसको कह सकते हैं, तो सर प्लीज तिवारी सर प्लीज हैव योर ओपिनियन ऑन दिस इशू प्लीज। थैंक यू डॉक्टर संजय कुमार जी। फर्स्टली आई वुड लाइक टू हाईलाइट द past empirical evidence when there had been strained relations between the US and India. Very frequently it is realized that the friction, the policy friction especially, which was mentioned by Mr. Dayalji, that is very important. In the past, whether it had been Bangladesh crisis, Bangladesh war, or Kargil war, there had been imposition of economic sanctions on India. But what had been the outcome, because history repeats itself but in a different way. This Trumpism is centrally based on ego factor, as we are observing again and again. I think there is a sort of consensus amongst us. There may be a consensus amongst us that this consensus regarding the Trumpism based on subjectivity. It is not based on rationality. The diplomatic and trade policy, the diplomatic and foreign policy, we expect should be based on
rationality and ruthlessness. But this Trumpism is based on irrationality, that is ego factor, highly subjective factor is there, and there also appears to be ruthlessness. Trump thinks about his own interest, but what I want to highlight is the fact that I'm rather heavily drawn upon time, and therefore I am summing up the basic, the core question: how and how far Trump's say harsh trade policy towards especially India and other countries, but we may focus on India, be sustainable? Because the evidence is that despite imposition of tariff, increase in tariff, Indian exports have increased. The latest data is that there had been 1.8% increase in exports. So if, and the Niti Aayog has also come up with a document regarding the export mission. India is trying to expand its say export market, export diversification is being focused. Therefore, I'm not able to put any specific question to Dayalji, but my only point to be say enlightened upon by Dayalji is whether this say policy prescription, policy friction, especially policy conflicts characterized by inner contradictions, by Trumpism, will sustain itself, or will it hurt the US more as compared to India? India is in the strong position because India's greatest domestic market and its development potential is capable of to sustain its own interest. But as you have mentioned, that in view of the growing incidence of fiscal strain and say debt, government debt, the US economy itself is latently facing a deep economic crisis. Well, let me say that, yes, I have come across reports that our exports to the United States have not come down. In fact, that there has been a slight increase. But what happens if he puts the 500% tariffs because of our purchases of Russian oil? Now, because of our requirements and because Russian oil comes to us at a very reasonable price, heavily discounted, we will find it very difficult to stop buying Russian oil. But then we have to face these 500% tariffs. So if the 500% tariffs come in, then I'm afraid that exports to India, from India to the United States will become unviable because US importers will not be able to afford those very high tariffs. You know, the United States is India's largest export destination. And things were moving in the right direction till these tariffs came in. Of course, we have many options. We are diversifying our markets. We are entering into more and more free trade agreements with a whole host of countries. So we are trying to reduce our dependence on the US market. But nonetheless, the United States, as I said, was our largest export destination. So if the increase of tariffs take place, then naturally we are going to be hurt. And this is what Trump wants to do. Of course, it's another matter that the United States is also getting hurt in the bargain. There have been a spate of cases which have been filed against the Trump administration by a number of sources, a number of organizations challenging the legality of these tariffs. And that's how the matter is in court. The courts had decided against the administration at the initial stage, at the appeal stage, and now the matter has gone to the Supreme Court, and it may take a while for the judgment to come.
I may mention that the Supreme Court is viewed as basically pro-Trumpian because the majority of the judges were appointed during the Republican administrations. So they may take a view which favors Trump. Also, US administration sources have said that even if the court strikes down these tariffs, they have recourse to other measures. So the matter will continue to be very complicated because of the nature of Donald Trump's personality, because he can't take a no, because he has a huge ego. And if he climbs down, then he may feel that his voter base may think that he is weak. So he wants to portray himself as the strongest person on the planet, someone who is always right, someone whom everybody else listens to. So this ego question will continue to hamper any meaningful progress between India and the United States in their diverse relationship even in the remaining 3 years. Things will be very unpredictable and difficult. Can I just add one point? Sure, Yeah, of madam, course. please. Yeah, actually, the same thing is happening with Iran also. Like Trump has already threatened Iran to stop torturing the protesters. And if actually Iran has said that now there are no killings and nothing, no hangings, etc., etc. Otherwise, Trump has decided to impose 25% tariff on the countries who import oil from Iran. So again, India is going to suffer because India is the largest exporter of rice to Iran. So the US policies are not at all favoring India this time. Maybe in future, nobody knows, because as Mr. Dayal is also saying, I am also saying that the unpredictability is leading towards uncertainty, and uncertainty is leading towards a kind of dilemma in the international relations, which was not witnessed so far from 1945 till date. This is only one point I wanted to make. Something to add about also this factor, sir. May I say something? That imposition of 500% tariff, it doesn't meet at all a kind of trade, a kind of market, or kind of international peaceful market situation. How can we call it a market-driven things like that? That means Trump doesn't want any kind of trade, any kind of such kind of thing. In fact, something is going into his mind, and perhaps I would like to call it that a new kind of colonialism has started by the act of Trump, by capturing the Venezuela, its oil reserve. And because this is the biggest oil reserve in the whole world, so that means, and at the same time saying that India shouldn't buy Russian oil. What does it mean? That means you don't want any kind of trade, you don't want. इसका मतलब है कि सारी चीजें जो ट्रम्प है समथिंग वो कुछ अलग किस्म से सोच रहे हैं, और एक प्रकार से जो जिस वर्ल्ड ऑर्डर की आपने बात की है सर, उस पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को इन्होंने तहस नहस कर दिया। अभी तक तो डिस्टर्ब था, लेकिन मुझे लगता है कि पूरी तरीके से उन्होंने तहस नहस कर दिया। हमारे बीच में प्रोफेसर संजय भट्ट जी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मैं चाहता हूं सर प्लीज इस पे अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, अगर आप जुड़े हैं तो प्लीज अपनी बात कुछ कहें। सर संजय भट्ट सर, अगर आप सुन रहे हैं। नहीं, अच्छा, वैसे मुझे 4:30 बजे एक दूसरे डिस्कशन में जुड़ना है, तो ये जरा 5:30 5:30 बजे, अभी हाँ। 10-12 मिनट है। अभी 10-12 मिनट है। So तो Sanjay ji, you can हाँ, sir. ask participants if they have questions. हाँ, General participants, so कोई that पार्टिसिपेंट before he अगर पूछना goes, चाहते हैं, हाँ, हाँ, there are तो young पूछ सकते हैं। participants एक पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है, डॉक्टर मेघा का है, वो मैसेज बॉक्स में है कि द एग्जिस्टिंग सिचुएशन अपीयर्स एथिकली अनटेनेबल इन द इंटरनेशनल एरिना। डेफिनेटली अनटेनेबल है। दिस रेजेस क्रिटिकल क्वेश्चंस
regarding responsibility and accountability. Who is obligated to regulate or address such situations, and how relevant and effective are the United Nations को लेकर है and international law in ensuring ethical conduct and global justice. तो ये 2-3 चीजें हैं सर. प्रभु सर क्या मतलब इस पे आप सोचते हैं? जी. Donald Trump doesn't believe in the United Nations. He's ridiculed it. He has said that all that the United Nations can show is a failed teleprompter and a failed escalator, because when he went last time to address the UN, these things didn't work. And he mocked the UN Secretary General also. So the fact is that he doesn't believe in internationalism. Trump doesn't believe in international cooperation. He doesn't believe in international organizations in a way that earlier US administrations have done. He believes in only his right and his decision-making for America's interest. So in other words, if he feels anything is impeding America's interest or impeding his own policies, he will go against them. And he has withdrawn from so many multilateral organizations, including the WHO, which is such an important body. And he continues in the United Nations because he has a permanent seat in the Security Council. He will not withdraw from there because that gives him a Chaudhary status. But he has no real faith in the multilateral system, and he is slowly turning everything topsy-turvy. He is going to try and reshape things, and the 3 years that remain are going to be really very, very troublesome. सरोज सर, अगर आप कुछ, हाँ संजय भट्ट सर, प्लीज, हाँ अगर आप कुछ कहना चाहते प्लीज सर. या am I clear in my voice? Can you hear me? Voice is not. थोड़ा मुश्किल हो रहा है, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है. I have to make only 2 points. Trump is not only egoist. Trump is also a big narcissist. Yeah. And a narcissist up to the extent that he wants to bulldoze all the institutional sanctity. And whether it is a UN or whether it is its own American internal democratic institution. And by nature, he is not a democratic at all. The unfortunate part is that right now there are more than 40 countries involved into the different kinds of wars. And in my opinion, World War III is already on. And in coming 2 months, probably it will be declared. This is my hunch. And unfortunately, Trump will be leading the world to the extent where all sort of international relations will be in turmoil. The most affected parties will be the marginalized people, marginalized countries, underdeveloped and developing countries. Fortunately, we have come on the 4th position of economy, despite his claim that India is a dead economy. So I think that Trumpism will be remembered as another narcissism. Thank you. Okay, sir. Thank you. Sir, we should combine. सरोज सर की बात पहले सुन लेते हैं 2 मिनट में. हाँ, सरोज सर कुछ कहना चाहते हैं. जी सर, प्लीज. हाँ सर. Thank you so much, Sanjay ji. जी. And a great opportunity for us to hear Ambassador Prabhu Dayal ji. And today we stand at a juncture where global politics has undergone a profound transformation. And Donald Trump's return in 2025 has introduced the world to a second and more impactful phase of Trumpism. For India, this period is a blend of both opportunity and challenge. On one hand, there are shared strategic interests, and on the other, America's first policy has intensified pressure on our trade relations. As of January 2026, the biggest challenge before India is trade protectionism. The Trump administration has imposed heavy reciprocal tariffs on Indian goods, and this has adversely affected both key sectors such as textile and jewelry.
For India, maintaining a balance between energy security and friendship with the US has become more difficult than ever. So, what are the way for India? I will not speak for long. I will make some of the important points only. Despite heavy American pressure, India has placed national interest first and continued purchasing Russian oil at concessional rates. Due to pragmatic balance with China also, due to growing trade pressure from US, India has shown some flexibility on select economic fronts with China to prevent disruptions in supply chains. What should be the road before India? The coming phase demands transactional diplomacy. India must make some sector-specific agreements. Instead of pursuing comprehensive trade deal with the US, India should focus on smaller sector-specific agreements that safeguard the interests of both countries. For example, in defense manufacturing, beyond purchasing weapons from the US, India must emphasize technology transfer to achieve self-reliance in the defense sector. Over 4 million people of Indian origins are living in US, and they are the greatest strength. They can serve as a bridge between the Trump administration and India. Trumpism is not a crisis for India, but a test. It reminds us that in international relations, there are no permanent friends or enemies, only permanent interests. India of 2026 is an emerging power, and if we keep our economy strong and maintain flexibility and in our diplomacy, we will not only navigate this phase safely, but also emerge as a more autonomous global power. Thank you so much, Sanjay. Thank you, sir. Sir, Prabhu, sir, because you have to leave the program. So the last word from I entirely agree with what the previous two speakers have said, Mr. Verma and Mr. Sanjay Bhatt. I entirely agree with them. And in fact, I was almost saying quite the same thing. It is going to be a very big challenge. How do we satisfy Trump? We are not going to go any distance in trying to meet his ego. But there are complications, and both the previous two speakers have pointed them out. Professor Sanjay Bhatt rightly pointed out that Trump is not just an egoist, he is also a narcissist. And there is no doubt that he's very personality-driven, and he goes to any extent to belittle critics and call the media fake media, or refer to anything which he seems to be in opposition to his own policies as something which is totally contemptible. He dismisses all criticism. He's a very difficult person to deal with. But unfortunately, we'll have to deal with him because the United States is an important global player. So I'm afraid you'll have to now let me go because I have to jump on to another discussion. That's a TV discussion for Barkha Dutt. But this is a recording. We are doing it at 5:30, but it'll be telecast later. I don't know when. So please. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, Prabhu. What an honor. What a privilege. Thank you very much. Thank you very much. Invited. It was a great pleasure having you on the CSSP platform. And your recordings will be shared by Sanjay ji to many. And Yes. many would have the benefit of your deliberations today. So thank you very much for coming. Thank you, Dr. Verma. In spite my of old your friend busy that schedule. invited me. I was totally pleased and delighted. Thank you. Thank you. Sanjay, you can carry on the discussion. Continue, Karve, sir. So, Madam Sandhya Dr. Verma, Chaturvedi. can I leave now? Ji, bilkul, sir. Thank you very And much it was for a your kind presence. wonderful discussion and wonderful speaker you invited. So all best wishes and congratulations to you and your team. And Thank you. I also could not resist my
interest or my my curiosity to be part of this. So thank you so much. It's see you it's soon. our gain actually that such eminent people gather on this small platform and have serious deliberations. It's a collective learning platform. So whenever we call a speaker, the idea is just to have a small group deliberate on the issue and feel enlightened about the subject. So thank you very much for your coming and intervention. Thanks a Thank lot. you. Thank My you, best ma'am. wishes Thank to you. everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Excuse me, ma'am. Yes, yes. Verma sir, namaskar. Namaskar, Notial ma'am, namaskar. namaskar. I'm Dr. Sangeeta Vijay from Vanastali Vidyapeeth. अच्छा नमस्कार नमस्कार संगीता जी। सर आपने बहुत अच्छा डिस्कशन रखा, आज मेरे को मौका मिला तो मैंने सुना, और एक पॉइंट जो मैं रखना चाह रही थी वो मैम नोटियाल मैम ने भी रखा, पर उसमें मेरा एक क्वेश्चन है सर कि मैम आपने जो बात कही है बोर्ड ऑफ पीस की, इसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या यूएन की जो रेलेवेंस है या ये इंस्टीट्यूशन है यही बिल्कुल पूरी तरह, वैसे तो फेलियर तो चल ही रहा है, लेकिन ये क्या बिल्कुल अबॉलिश ही हो जाएगा क्या? अच्छा, am I to आप answer सही है। this? हाँ अच्छा, आप सही है। मुझसे जी जी जी। it's a board with I think great aims as per Mr. Trump. So because it's still being processed, because earlier it was with the UN authorization to look after the peace implementation of peace pact in Gaza. So the purpose was specific, but now Trump wants to make it larger and bigger to see the conflicts in each part of the world and to restore peace there. So now I think there is a move, because to read the mind of Trump is very, very difficult. He's unpredictable because at one moment he'll announce board of peace and maybe next moment he'll say no, there is no board of peace. But one thing which I have read, and I'm very confident about that he has no respect for international organizations, no respect, neither for multilateralism, because he has withdrawn from almost more than 60 international pacts, like climate pacts, like clean energy pacts, like promoting trade or democracy, or even SDGs. So he is anti-multilateralism, and he would like to control United Nations in a way that will fulfill his interests. So maybe in long run, because the way he has been giving invitations, and some of the countries like Hungary was the first country to join that board of peace. And there are other countries also like Argentina and many small countries and other countries of Europe also who have shown their eagerness to join that board of peace. India has also got that invite, but India has yet to make up India's mind, because India is all for multilateralism. India will never support an organization which will be created on the basis of the ego of a person who thinks that he's the best suitable person to maintain peace in the world. And if you see clearly, rather maintaining peace, I think he's making the world a conflict zone. Everywhere, in each part of the world, there are conflicts, and he wants to create a situation where everyone will like to say, okay, Trump ji, hame bacha lijiye. We have the example of Venezuela. Then Colombia. The Colombian president talked to Trump and massaged his ego. Then he said, okay, fine, I'm not going to attack Colombia. Mexico is also there. Cuba is also there. All the countries are just pack of cards. Which card will be broken? Nobody knows. The same thing he is doing with the alliance which he created, the US created, NATO, North Atlantic Treaty Organization. And they have a joint responsibility to defend each other. Now, who is fighting war with whom? If Trump wants to capture Greenland,
and the European countries are not liking it, the war will happen with against whom? Against the allies only. So he has no respect for allies. He has no respect for the organizations which were created after the Second World War. UN is also one of those organizations, which Trump thinks is now outdated because UN has not stopped any war. Rather, he has stopped 8 wars in a span of 1 year only. So this makes a sense that when he thinks that he is the only person who is stopping the war, then why he can't become an international organization and propose a board of peace? So that's why he has done that. So specific purpose is defeated and a larger purpose is being served before the world. So what would you say? That in a later stage, if Trump keeps on doing the same thing, maybe the United Nations will become redundant. Already it has become redundant. So Yes. this is a possibility only. Nothing can be said with certainty, but the way things are moving, it can be certain also. Like I said, unpredictability is leading to uncertainty. Uncertainty is leading to trauma, anxiety, and again the question of peace building and peacekeeping is coming before, which is the role of United Nations Security Council. And there are 5 countries who have nuclear power. They have United Nations Security Council. Russia and China is also there. And they don't support Trump's tactics of capturing Greenland. They don't support the board of peace also. So a tug of war is going on, and I don't know when this can lead to a different kind of a war. So this is a very shaky kind of a situation in the international arena, and Trump is definitely leading, the Trumpism is definitely leading towards neo-imperialism. This is what I have perceived. So thank you. Thank you for your question. I hope I could satisfy your query. Whatever was your answer. Whatever. Yes. Yeah. Thank you so much, madam. Yeah, और हमारे बीच में अभी मैडम जैन जुड़ी हुई हैं, अगर आप सुन रही हैं तो मुझे लगता है कि कुछ सवाल उन्होंने यहाँ पे रखा। मैडम जैन, आप सुन रही हैं? क्राइस्ट कॉलेज से आप रही हैं, तो अगर आप सुन रही हैं तो कुछ अपनी बात नहीं। मैडम संध्या चतुर्वेदी, प्लीज, बेंगलोर से आप जुड़ी हुई हैं। हाँ, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जितेंद्र सर जी, इसके बाद जितेंद्र सर। अब जितेंद्र जी से पूछिए, मुझे भी थोड़ा सा कुछ काम है, तो इसलिए आई वुड लाइक टू लीव, एंड आई होप यू विल नॉट माइंड, and I have to leave. Thank you so please, much. Thank you very much for joining and giving your excellent interventions. Thank you. Thank you. संध्या मैम, 1 मिनट बोल लेने दीजिए ना, तो बैटरी मेरी डाउन खत्म है, 0 पर चली गई। बोलिए जितेंद्र जी, बोलिए, आपका आदेश कैसे टाला जाए? नहीं, मेरा निवेदन है क्योंकि किसी समय बंद हो सकता है, हम बाहर ही हैं भाई साहब को मालूम है। प्लीज सबसे पहले तो थैंक्स और ग्रेटिट्यूड आपके प्रति भी और प्रभु दयाल सर के प्रति भी, और जो क्वेश्चंस है, जो रिमार्क्स दिए, हमने तो बहुत कुछ सीखा है। हमने केवल इतना समझा है और समझ पाए हैं कि 2 चीजें हैं, द ग्रीड ऑफ मनी और द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी टू द एक्सटेंट, और आप उसको जो भी नाम ले लीजिए। तो इसके वजह से जो ये स्थिति पैदा हुई है, और संजय जी ने एक बात कही, न्यू इंपेरियलिज्म, तो न्यू नहीं है, न्यू गाइज उसको आप कह सकते हैं, उस गाइज में इंपेरियलिज्म है। और इंपेरियलिज्म तब जबकि ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो सेंस ऑफ सुपीरियरिटी नहीं है, पागलपन की हद तक जाए, तो उसमें दिक्कत एक ही हो रही है। पहले इंपेरियलिज्म हो गया, हम लोग गुलाम हो गया, वो स्थिति नहीं है। और उसमें भी हिंदुस्तान जैसा कंट्री चाणक्य को फॉलो कर रहा है, इसलिए ट्रम्प के सामने सबसे बड़ी चुनौती, इसलिए फोन भी कर रहे हैं, टेबल पर बुलाने के बाद भी कर रहे हैं, सबसे बड़ा हर्डल ट्रम्प के इस नेचर को कंट्रोल करना। और तमाम चीजें हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आपने कहा, यूएनओ के बारे में तो हम लोग यही पढ़ते रहे हैं, और इंटरनेशनल लॉ का विद्यार्थी होने के नाते एक बात जानते हैं, इंटरनेशनल लॉ के बारे में कहा जाता है इंटरनेशनल लॉ बाय कटसी है, और कटसी जिसकी खत्म हो जाए, बेशर्म हो जाए,
जिसको कोई लोक लज्जा नहीं हो, तो उस स्थिति में इंटरनेशनल लॉ कहाँ टिकता है मैम? कहीं नहीं टिकता है। आप तो निष्णात विद्वान उसकी हैं, आपके सामने कुछ कहना भी बड़ा कठिन है, लेकिन केवल इतना कहेंगे और बैठिए, हमारी खत्म होते जा रही है। हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं, हम बहुत ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं, बहुत सीखने को मौका मिला, और हम केवल इतना ही समझ पाए, आउट ऑफ ग्रीड, आउट ऑफ जो सेंस ऑफ सुपेरिटी, वो जो कहा था ना कि अमेरिका को महान बनाना नहीं, अमेरिका को महान बनाना है, वन सेकेंड, नो, आपको अपने महान बनाना है, इवन एट द कॉस्ट ऑफ द अमेरिकन इंटरेस्ट। बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिका में क्या स्थिति बन रही है बिकॉज ऑफ हिज स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग एज ए प्रीमियर ऑफ दिस दैट कंट्री। बट उसके लिए बेशरम के लिए कोई और, जिसको बेशरम भी हो, ग्रेटफुल भी हो, और सेंस ऑफ सुपेरिटी इस एक्सटेंट तक का हो कि कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या प्रिडिक्शन, एक पागल आदमी के बारे में क्या प्रिडिक्शन किया जा सकता है? और पागल ऐसा हो जिसके पास ग्रीड भी हो और जिसको बेशर्मी भी हो। पागल भी देखिएगा कि कुछ शर्म हया की बात करता है, इसको कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल सही आप लोगों ने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। संध्या मैम, हम पुनः आपसे क्षमा याचना करते हैं, स्थिति मेरी ऐसी है, भाई साहब को मालूम है, आज ऐसी परिस्थिति में पड़े हुए कि बाहर में हमने समझ लिया कि अब हम गाड़ी रोक लें और बात करने का मौका अगर मिला तो 1-2 मिनट का शेयर करें। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। ग्रेट टू हियर, है ना, प्रभु दयाल जी और अन्नपूर्णा नौटियाल जी और दी अदर पर्सन। जितेंद्र सर की बात पे ही मैं त्रिपाठी एक लाइन में एक बात बढ़ा दूं कि आउट ऑफ नीड वी कैन मेक ऑर्डर एंड आउट ऑफ ग्रीड वी कैन ब्रेक द ऑर्डर। मुझे लगता है आप यही सर कहना चाह रहे हैं। संजय जी, मैडम संध्या संजय जी संजय जी तब एक लाइन कहते हैं, स्वामी विवेकानंद को इन चीजों का एहसास था, इसीलिए उन्होंने पाश्चात्य को कहा था कि देखो जिस रास्ते पर बढ़ रहे हो वो रास्ता बहुत खतरनाक और विनाशकारी होगा, इसीलिए हिंदुस्तान को समाप्त करने की कोशिश मत करो, नहीं तो कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो तुमको गाइड करेगा। और हिंदुस्तान गाइड करने की स्थिति में है, इसीलिए हिंदुस्तान पर निगाह टिकी हुई है। और चूंकि कौटिल्यास को 100% फॉलो किया जा रहा है, हमको जैसा समझ में आता है, हम गलत होंगे तो मैडम करेक्ट कर देंगे, आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन हमको लगता है कि वही रास्ता है, वही बैलेंस की जो बात होती है, जो राज्यों के बारे में हम लोग कहते हैं कि मित्र है अरि मित्र मित्र है उदासीन है, तो बैलेंस ऑफ पावर के लिए जो सजेशन दिया गया है कौटिल्य के लिए, अल्टीमेटली वर्ल्ड विल हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ फिलॉसफी, अदरवाइज तो विनाश तो संभव ही है, उसके लिए तो कुछ करना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सब लोगों को, भाई साहब आपको भी इतना बढ़िया कार्यक्रम करने के लिए, और त्रिपाठी सर ने भी बड़े वैलिड क्वेश्चन पूछे। मैम चतुर्वेदी मैम, मैं आपके प्रति मैंने क्या कहे, हमारे पास कोई शब्द नहीं, आपने हमको समय दिया, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैडम संध्या चतुर्वेदी प्लीज। सबसे पहले वर्मा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इस मंच पर आप ऐसे लोगों को बुलाते हैं और कि हम लोगों को सुनने का अवसर मिलता है। जैसा कि अन्नपूर्णा जी ने भी कहा कि दयाल जी को सुनना बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। अपने पदभार के अनुसार उन्होंने जिस प्रकार अपने अनुभव से, व्यवहारिक ढंग से और इतनी गहराई से भी विषय को रखा, इसके लिए आपको भी धन्यवाद और दयाल जी को भी। मैं अपनी बात 5 मिनट में ही रखना चाहूंगी। आज अंतर्राष्ट्रीय वातावरण जो ट्रंपवाद से आप्लावित है, उसका स्वरूप निश्चित ही एकदम अनोखा है। भारत जिस वैश्विक वातावरण का सामना कर रहा है वह न तो स्थिर है और न ही किसी एक शक्ति के इर्द गिर्द घूमता हुआ। वह ऐसा वक्त है जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भरोसे की जगह आशंका और स्थायित्व की जगह अनिश्चितता ने ले ली है। इस पृष्ठभूमि में भारत की विदेश नीति एक नए संतुलन की खोज करती दिखाई दे रही है, और यह संतुलन केवल एशिया तथा अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि धीरे धीरे यूरोप को अपने केंद्र में ले रहा है। जहां तक भारत अमेरिका संबंधों का प्रश्न है, इसमें केंद्रीय दबाव अमेरिका के इस भ्रम का है कि वह भारत के प्रति उदार रहा है और बदले में बिना कुछ पाए। भारत के प्रति वॉशिंगटन नीति का वर्णन करते समय यूएस नीति एक शब्दावली का प्रयोग करती है, स्ट्रेटेजिक अल्ट्रूइज्म, यानी रणनीतिक परोपकार। उनका कहना है कि भारत के उदय में सन 2000 के मध्य से अमेरिका ने सहारा दिया है बिना कुछ बदले में पाए। देशों को प्रायः यह भरोसा होता है कि वे अपने साझीदार को पाने से ज्यादा देते हैं, परंतु रणनीतिक परोपकार का भ्रम तो आज खतरनाक
भ्रम की स्थिति में पहुंच गया है। बेशक भारत को त्वरित लाभ की स्थिति प्राप्त हुई है, लेकिन अमेरिका ने भी अपने उपकरणों जैसे पीछे लगे रहना, राजनीति को कूटनीतिक दबाव और सैंक्शन की धमकी के द्वारा नई दिल्ली से जो वो चाहता था पाया है। वास्तव में यूएस ने भारत को रणनीतिक पार्टनरशिप में मध्य 2000 में खुले हाथों से कूटनीतिक कंसेशंस दिए। उन्नत तकनीक, भारत और पाकिस्तान को अलग तरीके से देखने का वायदा और भारत को डिफेक्टो आणविक शक्ति के पहचान संबंधी डील करना। उसने यह भी स्वीकारा कि वह भारत को 21वीं सदी में मुख्य विश्व शक्ति बनने में मदद करेगा। यद्यपि यूएस इनके बदले में बहुत कुछ अपेक्षा करता था। भारत को चीन के प्रति प्रतिभार यानी कि काउंटरवेट के रूप में उभरने के लिए प्रोत्साहित करना, वह दिल्ली का सहयोग अफगानिस्तान, ईरान और रूस पर चाहता था। भारतीय बाजार में अच्छी पहुंच और भारतीय सुरक्षा आयात और आणविक सेक्टर में मार्ग बनाना चाहता था। वह यह भी आशा करता था कि नई दिल्ली एशिया में उसके सुरक्षा प्रबंधन का कुछ भार हल्का करेगी। वॉशिंगटन न्यूक्लियर डील के संपन्न होते ही वह जल्दी से जल्दी चाहता था कि उसे अपनी क्षतिपूर्ति का बदला लेना था, पर जैसे ही भारत ने फ्रेंच राफेल को अमेरिकन फाइटर्स के स्थान पर चुना, वह क्रुद्ध हो गया और भारत ने न्यूक्लियर डैमेज एक्ट जब पारित किया लोक दायित्व को देखते हुए, तो यूएस के न्यूक्लियर उद्योग ने उसे नापसंद किया और परिणामतः भारतीय संरक्षणवाद, विदेशी निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकारों पर अनेक व्यापारिक विवाद फूट पड़े। नवगठित मोदी सरकार ने संबंधों को सुधारने हेतु कई बिंदुओं को स्वीकारा, जैसे यूएस से सुरक्षा उपकरणों की खरीद को प्रभावी ढंग से बढ़ाया, न्यूक्लियर दायित्व के प्रति समझ बनाई और वाणिज्यिक मुद्दों पर सहमत हुआ। यूएस ने भारत को अमेरिकन भू राजनीतिक प्रोजेक्ट से जोड़ा, न केवल चीन में बल्कि अन्य स्थानों पर भी। उदाहरण के लिए उसने बड़े ही कायदे से बलपूर्वक नई दिल्ली को तेहरान से अलग होने के लिए मना लिया ताकि भारत का ईरान से व्यापार निषेध कर सके, पर यूएस रशियन सुरक्षा निर्यात से भारत को खींचने में ज्यादा सफल नहीं हुआ। भारत की वॉशिंगटन के प्रति कृतज्ञता का उदय विगत 3 वर्षों में हुआ। यूएस की रणनीतिक परोपकारिता का मेल भारत की रणनीतिक स्वायत्तता से न हो सका और यूएस की कुंठा का यह एक बहुत बड़ा कारण बना। अमेरिका की आकांक्षाओं का महल तब ढह गया जब भारत ने गलवान घाटी में 2020 में चीन से संघर्ष के बाद अमेरिका से कोई गठबंधन नहीं किया। रूस यूक्रेन युद्ध में नई दिल्ली का पश्चिम के साथ जाने से इनकार करना यूएस को खफा कर गया। ट्रंप की धौंस वाली शैली ने इस दरार को विशिष्ट बना दिया, पर उसकी मांगे पूर्ववर्ती शासकों जैसी ही थी। बाजार में व्यापक पहुंच, रूस व ईरान पर कम निर्भरता और चीन की प्रतिस्पर्धा में यूएस को अधिक समर्थन। वर्तमान संकट के दौरान इस रणनीतिक परोपकार का भ्रम अवास्तविक अपेक्षाओं और असंतोष को बढ़ावा देकर भारत अमेरिका पार्टनरशिप खतरे में आ गई है। जितनी जल्दी वॉशिंगटन इस भ्रम से निकलेगा, उतना ही पार्टनरशिप की दीर्घायु के लिए बेहतर होगा। वर्तमान में ग्रीनलैंड को खरीदने या कब्जा करने की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीति ने अटलांटिक महासागर के दोनों ओर भीषण कूटनीतिक और व्यापारिक युद्ध को छेड़ दिया है। यह स्थिति शीत युद्ध के बाद का सबसे बड़ा कूटनीतिक संकट है। ट्रंप ने लोकतंत्र को इस प्रकार किनारे रख दिया है जैसे कोई आउटडेटेड मैनुअल हो। उसने ईरान और अफगानिस्तान से कुछ भी सीखे बगैर एक विदेशी नेता को कांग्रेस की सहमति के बिना अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अवहेलना करके अगवा करके रख लिया। कोलंबिया, ग्रीनलैंड और अब ईरान के खिलाफ सैन्य कार्यवाही से स्पष्ट है कि वर्चस्व की फूहड़ मुहिम अभी नहीं थमेगी। ट्रंप की राजनीति साम्राज्यवादी लालसा का पुनर्जन्म तो है ही, और घर के भीतर लोकतंत्र को खोखला करने की प्रक्रिया भी। एक भ्रष्ट नेतृत्व
जब बिना प्रतिरोध के आगे बढ़ता है तो उसकी कीमत देश को ही नहीं बल्कि विश्व को चुकानी पड़ती है। 500% टैरिफ जैसी संभावना भारत के लिए एक तात्कालिक संकट अवश्य है, परंतु उसकी रणनीतिक परिपक्वता की भी परीक्षा है। भारत का वे फॉरवर्ड त्वरित टकराव और भावनात्मक प्रतिक्रिया में नहीं, अपितु रणनीतिक धैर्य, सशक्त कूटनीति और संरचनात्मक आर्थिक मजबूती में निहित है। इससे वह अधिक परिपक्व, स्थिर, आत्मनिर्भर और प्रभावी वैश्विक शक्ति के रूप में उभर सकता है। आगे भारत के लिए क्या संभव हो सकता है? यूरोप इस संदर्भ में अपेक्षाकृत एक स्थिर और नियम आधारित साझेदार के रूप में सामने आता है और यूरोप के साथ मजबूत संबंध भारत को बहुध्रुवीय विश्व में अधिक आत्मविश्वास के साथ खड़ा होने की क्षमता देते हैं। धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू। मेरे ख्याल से अब हम लोग लास्ट स्टेज पे, अगर किन्हीं को कोई सवाल बाय द वे, और भी जो दो चार जो भी यहाँ पे बैठे हैं पार्टिसिपेंट, अगर कोई सवाल करना हो तो आप कर सकते हैं, और नहीं तो फिर प्रोग्राम को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं, अगर किन्हीं के पास कोई सवाल है। सौरभ मिश्रा जी, शायद आप, सौरभ मिश्रा जी। हाँ सौरभ जी, अरे नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मुझे लगा आप ही यहाँ। मैं अब थोड़ा- हम लोग वाइंड अप करने के पहले सौरभ जी को जरूर हम लोग सुनना चाहेंगे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे एक जबरदस्त अथॉरिटी है, और आईडीएसए में ही है, अभी एमईटी में है सौरभ जी। नहीं, आईडीएसए में हूँ मैं। आईडीएसए में आप हैं, तो हम चाहते हैं कि प्लीज आप अपनी बात जरूर कुछ नहीं सर, मैं तो बस ऐसे ही ज्वाइन कर लिया था, आप लोगों ने कोई क्या बात नहीं, चर्चा नहीं, कर लेकिन रहे हैं मुझे उसको लगा सुनने शायद के आप ही लिए। हैं जी, प्लीज। मैंने शुरू में सुना नहीं, कुछ मीटिंग थी तो लेट आया मैं, हाँ हाँ। इसलिए तो जो सब बातें हुई हैं वो सही दिशा में ही हुई हैं अगर कहा जाए तो। और ट्रम्प को समझना अब बहुत मुश्किल नहीं रहा है। जैसे कि सब लोगों ने कहा है कि अनप्रिडिक्टेबल हैं, उतना अनप्रिडिक्टेबल भी अब नहीं रहे हैं। जैसा कि उन्होंने वेनेजुएला में कर दिखाया है। बेसिकली उनकी सारी रणनीति के जो कोर में उनका हम एक जो इनसिक्योर माइंडसेट है अपने इम्पीरियम के जाने का, तो एक डेस्परेट अटेम्प्ट है उस एम्पायर को बचाने के लिए। और कोर में उनकी सारी थिंकिंग के रिसोर्स हैं, ऐसे रिसोर्स जो आगे 10-15 साल तक तो नहीं, लेकिन उसके बाद भी उनको उन शक्ति का स्रोत प्रदान करते रहें। इसीलिए उन्होंने वेनेजुएला पे अटैक किया। वेनेजुएला के लिए ड्रग्स कोई कारण नहीं था। उन्होंने तेल की बात नहीं करी थी, लेकिन शंका हमेशा से यही थी कि तेल की बात होगी और रेजिम चेंज उसका एक रास्ता वो निकालेंगे। रेजिम चेंज किस तरह से होगा उस पर विवाद या फिर बातें हो सकती थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने किया है, अभी भी इसको रजीम चेंज नहीं कहा जा सकता। तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होना बाकी है। हालांकि उन्होंने एक थ्रेट देकर के वेनेजुएला को अपने एब्डक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मादुरो के द्वारा वहाँ पे चीज़ों को परिवर्तित करने का प्रयास किया है। और ऑफ कोर्स जो मारिया मशादो बाहर चली गई हैं, अमेरिका ने ही उनको वहाँ पे शिफ्ट किया है, स्टेल्थली कहा जाए तो स्मगल किया। तो उसी समय से ये निश्चित हो गया था कि किसी प्रकार का एक्शन आने वाला है, और थोड़ी समय के बाद मशादो भी शायद एक मुख्य भूमिका निभाएंगी वेनेजुएला के अंदर। तो ये ट्रम्प की जो थिंकिंग है उसके हिसाब से देखा जाए तो कोर में रिसोर्स है, वेनेजुएला में ऑयल, ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ। कितना बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से वो सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं उस पे एक बार हमें भी विचार करना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से वो टैरिफ का प्रयोग कर रहे हैं वो अंतहीन नहीं हो सकता। टैरिफ की भी अपनी सीमा होती है, और उसके बाद फिर जिस प्रकार से वो अपने ही अलाइज से पेश आ रहे हैं, वो बाकी अन्य देशों के लिए भी टैरिफ की जो समस्या है उससे निदान पाने के लिए कंडीशंस प्रदान करती हैं या कंडीशंस जनरेट कर रही हैं। क्योंकि यूरोप, भारत और अन्य देश अगर एक रिकॉन्फ़िगरेशन करने लगे अपने आर्थिक हितों का और ट्रेडिंग हितों का ओवर पीरियड ऑफ टाइम, 4-5 साल में, 5 साल में,
और एफटीएस, जैसे कि आपने खुद देखा होगा कि यूरोप और मर्कोसुर का एफटीए हो गया, जो कि बहुत साल से लंबित था, 25 साल से। तो उस तरह के एफटीएस एक झटके में अगर साइन कर लिए जाते हैं, और ऐसा भी लगता है कि शायद भारत और यूरोपियन यूनियन की भी डील साइन हो जाए, तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर हो जाती है तो ये एक प्रकार का संकेत होगा कि वर्ल्ड का रिकॉन्फ़िगरेशन ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस में हो रहा है, और यूरोप भी इस ट्रम्प की हकीकत से पूरी तरह सचेत है, और सचेत ही नहीं है बल्कि उसको लॉन्ग टर्म में रिजॉल्व करने की कोशिश भी कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। ट्रम्प की थिंकिंग बहुत क्लासिकल है। अगर कहा जाए तो ट्रम्प की थिंकिंग की जो, या फिर जो ट्रम्प की टूल किट है, वो 19th सेंचुरी मोनरो डॉक्ट्रिन के आसपास, या उसके प्रकार की जो थिंकिंग थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, लैंड ग्रैब। आप देखिए, अगर ग्रीनलैंड को खरीदने की बात करते हैं तो आज के वर्तमान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कितने ही स्टेट्स इस तरह से खरीदे गए हैं दूसरे इंपीरियल पावर से। अलास्का भी खरीदा ही गया हुआ है। तो वो जो वोकैबलरी है, वो जो थिंकिंग है, वो 19th सेंचुरी माइंडसेट से आती है। ऑफ कोर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक ऐसा ग्रुप है जो उसके प्रति बहुत नॉस्टैल्जिक है। इसलिए कहा जाए तो ये ट्रम्प एंड उसके आसपास के लोगों के दिमाग में एक नॉस्टैल्जिक इम्पीरियलिज्म का भाव हमेशा रहता है। उस वहां से टूल किट अगर आप उठाना शुरू करेंगे तो इनका माइंडसेट पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। रिसोर्स भी उसके कोर में ही पाया जाता है। कितने दिन तक ये चलेगा, ये सवाल हमारे लिए बड़ा होना चाहिए, और इस पे हमें सोचना चाहिए। क्या ट्रम्प तक सीमित है, उसकी पर्सनालिटी, उनकी पर्सनालिटी तक सीमित है? क्योंकि एक पर्सनालिटी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक सीमा तक ही धकेल सकती है या बदल सकती है। उसके बाद फिर अगर उसको कंटिन्यू करना होता है तो उस देश की या सत्ता या जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं उनकी इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जाना होगा। तो बेहतर है कि हम कोशिश करें कि रिपब्लिकन्स की जो अपनी इंटरनल फैक्शनल पॉलिटिक्स है, उसमें कौन सा ग्रुप किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है इस समय, उससे हमें चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी कि हमें एक मीडियम टर्म में या फिर अगले 5 साल में किस तरह की नीति अमेरिका के प्रति अपनानी चाहिए। केवल ट्रम्प पर हम ये निर्भर नहीं रख सकते। जिस तरह का परिवर्तन मतदाताओं में देखा गया है, अमेरिकी मतदाताओं में, उसके स्टडी के आधार पे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगले 5 सालों में अमेरिका की पॉलिसी क्या होगी। उस हिसाब से हमें कॉन्फ़िगर करना होगा। मैं इसके प्रति बहुत आशान्वित नहीं हूँ। यदि ट्रम्प जाते भी हैं तो एक प्रकार से ट्रम्प ने डेमोक्रेट्स को वो मौका दिया है जो वो नहीं कर सकते थे अपने सिद्धांतों या फिर अपने व्यवहारिक पैटर्न, जो उनके व्यवहार के पैटर्न है उसके कारण। उन्होंने, ट्रम्प ने कर दिया है। अलग ही जिसको कहते हैं औचित्य पूर्णता का जामा पहनाएंगे डेमोक्रेट्स उन कृत्यों को, अगर वो आ भी जाते हैं। क्योंकि ये ट्रम्प ने जो भी किया है अमेरिका को एक रिसोर्स, मतलब अमेरिका फर्स्ट रख के रिसोर्स ग्रैब की दृष्टि से किया है, जहाँ पे जिस पे अमेरिका में हमेशा एक मतता पाई जाती है। कौन किस तरह से करेगा वो, उसमें मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस बात पर मतभेद बिल्कुल नहीं होता कि हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत है और कैसे हम उसको लें। तो उसको लीगल जामा पहनाना, उसको मल्टीलैटरल जामा पहनाने का काम डेमोक्रेट्स आगे जाकर के करेंगे। तो कोई बहुत भारी परिवर्तन होने वाला है ऐसी उम्मीद मुझे नहीं है। मॉडरेट मतलब तरीकों में अंतर आ सकता है। ऐसी ही अंडरस्टैंडिंग मेरी बन रही है। बाकी आप लोगों ने बहुत सारी चर्चा की है। भारत को थोड़ा सा सचेत रह कर के काम करना पड़ेगा। लेकिन आशा यह है कि ट्रम्प ने यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन देशों को भी परेशान कर रखा है। तो ये समय है भारत को और यूरोप को इसको एक मौके की तरह देखने का, और यूरोप को भी अपना अमेरिका पे जो निर्भरता है उससे दूर हटने का, और स्वयं अपने पैरों पर रक्षात्मक तरीके और आर्थिक तरीकों से खड़े होने का। सो ये मेरी जनरल समझ बनती है। बाकी मैं शुरू की व्याख्यान सुन नहीं पाया क्योंकि मीटिंग की वजह से थोड़ा लेट हो गया था। तो आशा है कि सब
थैंक यू सौरभ जी, आपने बिल्कुल धन्यवाद। एक नवीन दिशा दी है इस पूरे चर्चा को। और मुझे लगता है कि ये मुद्दा ऐसा है कि अभी और भी हम लोग इस प्रकार के टॉक्स करेंगे और उसमें आपको जरूर आमंत्रित करेंगे, एक बिल्कुल नए डायमेंशन की तरफ जिधर आपने इशारा किया। और मतलब एक प्रकार से कहना चाह रहे हैं कि अमेरिकन पॉलिसी का एक दीर्घकालीन पॉलिसी का एक हिस्सा हो सकता है, चाहे वो रिपब्लिकन्स हो चाहे डेमोक्रेट्स हो, लेकिन ये हिस्सा हो सकता है। यानी एक बहुत बड़ा परिवर्तन जिसका मुंडो डॉक्ट्रिन की जो आपने बात की। लेकिन खैर हम सीधे वर्मा सर लास्ट में, सर चूंकि अब ऑलरेडी 6 बजने वाला है, तो सर प्लीज आपका ओपिनियन इस पे देते हुए सर, और प्रोग्राम को हम लोग फिर यहीं पे फिर वाइंड अप भी करेंगे। सर वर्मा सर प्लीज। थैंक यू संजय जी, बहुत ही एनलाइटनिंग रहा आज का पूरा ये डिस्कशन, राइट फ्रॉम एम्बेसडर दयाल से लेके और सौरभ जी तक। सभी वक्ताओं ने बहुत ही विषय के विविध आयामों को बेहतरीन ढंग से छुआ है। और मुझे लगता है कि इतना ये कॉम्प्लेक्स इशू है कि इस पे जल्दी किसी राय पे पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तो बहुत ज़्यादा कोई खास कहने को नहीं है। बस इतनी सी बात मुझे लगती है कि ये सौरभ जी ने जो बात कही है कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। व्हाट वाज अर्लियर नॉट सो ओवर्ट हैज नाउ बिकम ब्लेटेंटली ओवर्ट। ट्रम्प के बिहेवियर से और ट्रम्प के उससे एक कोवर्ट प्रोजेक्ट तो अमेरिका का हमेशा ही रहा है, डोमिनेशन का। तो वो तो अपनी जगह पर रहेगा ही। ट्रम्प ने थोड़ा उसको वल्गर तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो हम लोगों को लग रहा है। तो ये तो चलेगा प्रोजेक्ट, और इसके लिए आपको अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। दो दो चीज़ों की तरफ मुझे और भी हल्का सा ऐसा लगता है कि एक तो जो सोशियोलॉजिकल डायमेंशन है और एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन है, ये टच नहीं हो पाया है इस आज के डिस्कशन में। तो एक एक लाइन में बस मैं उसको इंडिकेट करना चाहता हूँ कि सोशलॉजिकली अमेरिका को बहुत डैमेज किया है, बिकॉज ट्रम्प इज नॉट अमेरिका। अमेरिका एक बहुत लार्ज डेमोक्रेसी है। वहाँ के गवर्नेंस मॉडल का या गवर्नर्स का जो भी प्रोजेक्ट और ऑब्जेक्टिव हो लेकिन ये भी हमें स्वीकार करना चाहिए कि अमेरिका एक स्ट्रांग और बहुत ही सशक्त डेमोक्रेसी भी है। और ट्रम्प के अगेंस्ट काफ़ी वहाँ पे रिवोल्ट भी हो रहे हैं और लोगों में परेशानी भी है। लेकिन जिसका संकेत आपने भी किया था शुरू में और बहुत सारे और लोगों ने भी किया कि जो इंडियन डायस्पोरा है, जिसने कि अमेरिका के डेवलपमेंट में, अमेरिका के कोई एक महाशक्ति के रूप में उभरने में बहुत लंबे समय से अपना खून पसीना बहाया है, बड़ा योगदान किया है। वो डायस्पोरा जो है वो इन ए स्टेट ऑफ शॉक है और वो भयभीत भी है। क्योंकि जिस तरीके का जैसे आइस के जो उन्होंने अपने कारनामे इधर किए हैं, यू कैन सी इन बहुत सारे शहरों में, मिनियापोलिस में और तरह तरह के जो आ रहे हैं, तो उससे एक मतलब अजीब लोगों में दहशत भी आ गई है कि लोगों को ये बिलीव नहीं हो रहा है कि भाई ये जो इनके बॉर्डर पे जो लोग काम करते थे, आज आके आपके न्यूयॉर्क में और मिनियापोलिस में और कहाँ कहाँ आके किसी को भी पकड़ ले रहे हैं, किसी को भी इंक्वायर कर ले रहे हैं, किसी को भी शूट कर दे रहे हैं, जो कि उनका जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। तो एक तो ये बहुत ही खतरनाक वहाँ पे चीज़ डेवलप हुई है, जो कि पहले अमेरिकन सोसाइटी में नहीं थी। इट वॉज ए वेरी पीसफुल सोसाइटी अदरवाइज। तो और उससे जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड ग्रुप है वहाँ पे वो डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा है, क्योंकि ज़्यादातर 70% H1B पे हमारे ही लोग हैं वहाँ पे। तो वो अमेरिका को भी किस तरह से डैमेज कर सकता है वो तो एक दूसरी बात है इकोनॉमिकली, लेकिन सोशोलॉजिकली बहुत डैमेज किया है उसने अमेरिका को। और वहाँ पे एक फियर एलिमेंट सोसाइटी में, इंडियन डायस्पोरा में या डायस्पोरा जो डिफरेंट कंट्रीज के हैं उनमें हुआ है। दैट इज वन। दूसरा जो एक इशू मुझे लगता है कि वो ये है कि ट्रम्प को अभी केवल ईगो की वजह से ही लोग उसको रेट कर रहे हैं। लेकिन आई वुड ऑल्सो लाइक टू व्यू ट्रम्प एज एन एंटीथेसिस ऑफ एवरीथिंग अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे लग रही है कि उनका पॉलिटिकल जो एस्पायरेशन है वो ये है कि हाउ टू गेट अ सेकेंड टर्म, आई मीन द थर्ड टर्म यू कैन से। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है मुझे लगता है ट्रम्प के दिमाग में। क्योंकि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम लोगों ने पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति अधिक से अधिक जो है वो 10 साल तक अमेरिका का राष्ट्रपति रह सकता है। 2 टर्म्स वो इलेक्शन से जीत सकता है और 2 अधिक से अधिक टर्म वो ऑफिशिएट कर सकता है। इफ समबडी इज वाइस प्रेसिडेंट
अगर वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है और 2 साल का सेशन रहता है तो 2 साल वो कैरी फॉरवर्ड करेगा और 2 टर्म वो चुनाव लड़ सकता है। एट द मोस्ट ऑप्टिमम आप 10 साल के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति हो सकते हैं। व्हाट ट्रम्प इज ट्राइंग इज दैट ही इज ट्राइंग फॉर ए थर्ड टर्म। और उनको उनकी जो साइकोलॉजी मुझे लगती है वो ये लगती है कि इतना क्यास अमेरिका में मचा दो सोशोलॉजिकली या सोशल लेवल पे कि वहाँ पे वो अपने एग्जीक्यूटिव का इमरजेंसी पावर्स का प्रयोग करके ये कह दें जी अमेरिका में तो अभी चुनाव हो ही नहीं सकते हैं। आप लोगों को जान के ताज्जुब होगी कि ड्यूरिंग इवन द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द सेकेंड वर्ल्ड वार अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हुए और उसको रोका नहीं गया था। लेकिन ट्रम्प का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि ही हैज फ्लडेड द सुप्रीम कोर्ट विद हिज ओन कोर्ट पपेट्स। तो जुडिशरी में भी अपने लोगों को भर दिया हुआ है उन्होंने फर्स्ट टर्म में ही ये सब चीजें एंटिसिपेट करके। और अब वो पूरी तैयारी उनकी थर्ड टर्म की है कि किसी तरीके से वो थर्ड टर्म चुनाव लड़ लें और अपने जो उनकी पर्सनल जो एम्पायर है उनका, ही इज नॉट ओनली कंसंट्रेटेड ऑन द, वो एक कवर ले रहे हैं कि ही इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द अमेरिका के रिसोर्सेज को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बट मुझे लगता है कि उसमें एक ये भी एंगल है कि वो अमेरिका के रिसोर्सेज जो बढ़ा रहे हैं वो तो बढ़ा ही रहे हैं, एट व्हाट कॉस्ट, दैट इज वन पॉइंट। बट एट द सेम टाइम ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिज ओन पर्सनल एम्पायर, जो कि जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान में हिस्सान का इन्वॉल्वमेंट या और भी बहुत जगहों पे उन्होंने अपने पर्सनल एम्पायर बिल्डिंग जो की हुई है वो की हुई है। तो इज बेसिकली एक बिजनेसमैन है, तो वो अपने ढंग से अपनी पर्सनल चीज़ों को भी डेवलप कर रहे हैं। अब हाउ फार दीज थिंग्स विल गो, इंडिया के लिए ये अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी है, सब कुछ है, वो तो हमेशा ही रहा है, ग्लोबल सिनेरियो में होता रहता है। बट सर्टनली इसमें ये तो बात सही है कि ग्लोबल ऑर्डर में वी कैन एक्सपेक्ट ए वेरी सब्सटेंशियल चेंज। वो चेंज का नेचर क्या होगा, जैसे नाउ पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इस्लामिक नेटो एंड ऑल, जिसमें कि चाइना की भी एंट्री का कुछ इशू आ रहा है। तो बहुत सारा चेंजेस हो रहे हैं इस समय। कोई भी चीज, हम लोग तो आईआर के लोग नहीं है, आप सौरभ जी हैं ने बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने चीजों को किया और भी लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से बताया, लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है कि अभी हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि वो जैसे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस होता है कि अल्टीमेटली वेयर द फोर्स विल डायरेक्ट द पॉइंट एंड पुश द पॉइंट, टू व्हाट एक्सटेंट, इन व्हाट डायरेक्शन, यू डू नॉट नो। In the same way, this there is a law of parallelogram of forces at work in the global order, और किस डायरेक्शन में वो जाएगा अभी कह पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए everybody has to be very cool, and I greatly appreciate the pointer made by जितेंद्र जी कि इंडिया इसमें बहुत कूलली अपना आगे बढ़ रहा है, एंड वी आर नॉट सो मच इन टू वर्बल ड्यूल। जैसे कि लोग अक्सर आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि अरे जी मोदी तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं, भारत सरकार तो एकदम चुप है और ऐसा है वैसा है। क्या करें, लड़ें आपसे, आप जवानी जंग लड़ें आपसे जाके और उसका खामियाजा फिर भुगते हैं। उससे अच्छा है कि भाई शांति से आपको जो करना है आप अपना करिए। वाई शुड यू एंटर इनटू ए वर्बल ड्यूएल। जो हमारी पॉलिसीज हैं, जो हमारे चीज़ें हैं, वो तो जाहिर है कि बहुत सारा हमको नुकसान हो रहा है, लेकिन फॉर द नुकसान ऑफ मतलब दिस बिहेवियर ऑफ ए प्रेसिडेंट और ए पर्सन, आप मतलब अगर और ज़्यादा इसमें उसको एक्साइट करेंगे तो वो और बोगस टाइप के अपने काम करेगा और आपको परेशान करेगा। तो ठीक है, आप अपने को सेफ गार्ड करके प्रोटेक्ट करके चलिए। ग्लोबल सिनेरियो में जैसा कि आपने बहुत ही अच्छा कहा कि भाई नाइदर देयर आर परमानेंट फ्रेंड्स नॉट देयर परमानेंट फोर्स, द वे मोदी, पुतिन एंड जिनपिंग दे केम टुगेदर एंड हैड सम टॉक्स। बहुत सारी संभावनाएं बनती हैं कब क्या होगा। I will not say that it's, somebody said it's already the third world war has started. I would not go to that extent that the third world war has started. But certainly things are not so, congenial, और the global order में जितने भी कंट्रीज हैं, चाहे वो यूरोप के हों, चाहे वो अफ्रीका के हों, चाहे लैटिन अमेरिका के हों, चाहे एशिया के हों, चाहे वेस्ट एशिया के हों, चाहे ईस्ट एशिया के हों, हर कंट्री जो है एक प्रकार से बहुत ही स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी में इस समय जी रहा है, बिकॉज ऑफ जस्ट वन पर्सन एट द हेल्प ऑफ अफेयर हु वांट्स टू बी द टॉप मैन ऑन द टॉप बॉस ऑफ द वर्ल्ड। तो आज की जो डिस्कशन रही, मैं आई एम ग्रेटली बेनिफिटेड बाय दैट। और सर्टेनली थोड़ा सा इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट को और गहराई से समझना चाहते थे। प्रोफेसर तिवारी वॉज वेरी काइंड टू टेक वेरी शॉर्ट टाइम, बट मुझे लगता है कि क्योंकि ये सारा खेल
इकोनॉमिक उस पर जैसे लगता है कि इकोनॉमिक्स इसकी धुरी है, तो कभी हम लोग वक्त निकाल के प्रोफेसर तिवारी से इसके बारे में, इसके इकोनॉमिक implications के बारे में, हाउ द वर्ल्ड इज मूविंग, हाउ द वर्ल्ड इकोनॉमी इज गोइंग, हाउ द इंडियन इकोनॉमी विल बी इम्पैक्टेड, ये टैरिफ वार अगर हम लोग को समझ में नहीं आते हैं कि भाई 500% और 1000%, कोई भी परसेंट आप लगा दीजिए, what does it mean, how does it we get impacted, how does Americans get impacted, वहाँ भी हालत खराब है, वहाँ भी अच्छा खासा इन्फ्लेशन है, वहाँ भी शॉर्टेज हो रही है। तो बहुत सारी चीजें, एक ऐसा व्यक्ति आ गया है कि न तो वो, पता नहीं किसी को समझ में नहीं हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन, and certainly it's a very, very uncertain stage of things, not only in America, not only in Asia, not only in Europe, but all over the globe. और ये तो हद ही हो गई है कि आप किसी राज्य के सॉवरेन को उठा के उसका हथकड़ी बेड़िया लगा के उसको उसकी वाइफ को ले आइए, मतलब इट वाज अनहर्ड ऑफ इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। देयर वर सटल वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, लेकिन इतना ब्लेटेंटली चीजों को करना तो और पैरेलल जैसे यूएन को खड़ा करने की बात है, वो पता नहीं फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है उनका, कहाँ जाएगा क्या होगा। तो मतलब आई एम नॉट वेरी श्योर कि मुझे क्या कहना चाहिए। मैं खुद बहुत परेशान हूँ इस बात को लेके, लेकिन तमाम विद्वानों ने जिस प्रकार से इस विषय पे प्रकाश डाला है, मुझे लगता है कि कुछ हम लोगों को दिशा मिली है चिंतन की। इसके लिए आई एम एक्सप्रेसिंग माई ग्रेटफुलनेस कि आप सभी लोग आए और अपने विचारों को व्यक्त किए यहाँ पे। और CSSP के बिहाफ पे, मैं अपने बिहाफ पे भी और CSSP के भी बिहाफ पे आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए वो उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने आके और हमारे मंच की शोभा बढ़ाई, CSSP के मंच की शोभा बढ़ाई। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। संजय, Thank you once again, Thank you, each sir. and Thank you everyone for those who invitation, sir. participated. Okay, namaskar. थैंक यू। संजय जी नमस्कार, तिवारी साहब नमस्कार।